Now third type of disaccharide is lactose, which is made up of one molecule of glucose and one molecule of galactose. This is also called milk sugar. It is found in mammalian milk, that is the milk produced by all the mammals, females, that consist of lactose sugar, like milk produced by buffaloes, cows, sheep, goat, camel, human female, that contains lactose. दैट इज़ वाई द पाउडर्ड मिल्क जो हम बाज़ार से लाते हैं, ड्राई मिल्क, और जो बच्चों के लिए फॉर्मूला मिल्क आता है, दैट इज़ अ नेम इज़ रिटन ऑन देम, दैट इज़ लैक्टोजन. सो लेट अस सी ग्लूकोज, द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. दिस इज़ द रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर, एल्डिहाइडिक structure for glucose, and this is for galactose. We can see, let us draw it. One molecule of glucose and galactose. We will draw by making two hexagons. Glucose, H, OH, here it is H, OH. At third carbon atom position will be reversed, OH, H, and this is H, OH again. Here we have CH2, OH and H, and galactose, OH, OH. इसमें हमें पता है कि थर्ड और फोर्थ कार्बन एटम पे जो है पोजीशन रिवर्स्ड है. दिस इज द थर्ड कार्बन एटम एंड द फोर्थ कार्बन एटम. Here we have लास्ट इज CH2OH एंड H. तो अब यहाँ बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? ये OH और ये इस दोनों OH के बीच में. तो यहाँ पे क्या लूज होगा? वाटर मॉलिक्यूल, एंड व्हाट विल बी लेफ्ट? हियर वी हैव वन ऑक्सीजन. सो दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ ग्लूकोज and the 1, 2, 3, 4 fourth carbon atom of galactose. So this is a sugar molecule which represents the molecule of lactose. Lactose, that is the milk sugar. Now the third type of carbohydrates, they are polysaccharides. Polysaccharides which consist of more than 8 sugar molecules joined together. Poly means many, saccharide means sugar molecules. Now what are the general features of polysaccharides? They are large, they have complex structures, and their bond formation, it requires energy. They are formed by condensation, means two or more sugar molecules, they join together by elimination of water. And the general formula, their general formula is represented by C6H10O6 when they join together n number of times, where n is a unknown number. तो अगर हम देखें, if n molecules of sugars they join together, they will form C6. इसमें से क्या निकलेगा? देखो, H12O6 में से एक वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हम करेंगे H10O5. कितने टाइम्स हो जाएंगे? दे विल जॉइन n नंबर ऑफ टाइम्स, n मॉलिक्यूल्स ज्वाइन करेंगे और साथ में n molecules of water will be released. The structure of polysaccharides, they can be linear structures, they can be branched, or they can be unbranched structurally. But अगर हम repeating units देखें तो structurally the polysaccharides, they are divided into two types, that is homopolysaccharides, which are formed by repeating of
same molecules, and heteropolysaccharides which are formed by repeating of more than one type of molecules. Let us see the structure of homopolysaccharides. Let us see homopolysaccharide. Homopolysaccharides, they are the complex carbohydrates in which the repeating unit or the monomers, they remain same. For example, first we have glycogen. Glycogen is also known as animal starch. This is the reserved sugar in the body of animals, and it is the successive glucose molecules are joined in it by 1,4-glycosidic linkage, and these glycogen, they are usually glycogen molecules, they are usually stored in liver and muscle cells. Now this glycogen upon hydrolysis, means by addition of water, it can break down into subsequent units, that is glucose, and this process is known as glycogenolysis. Process is called glycogenolysis. Lysis means breakdown. And formation of glycogen from the sugar molecules or the glucose molecules, the formation is called glycogenesis. These are the few important terms. Yani formation of glycogen is called glycogenesis, and this glycogen can be broken down into glucose molecules by addition of water or upon hydrolysis, and this process is called glycogenolysis. Lysis means breakdown and genesis means formation. अगर हम देखें ग्लाइकोजन का सिंपल स्ट्रक्चर, इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रांच्ड चेन्स. देखें, दिस इज glycogen molecule, they have several branched glucose chains. देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्लाइकोजन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. ये क्या है, एक लीनियर चेन. This is another linear chain. All these, they are representing the glucose units joined together. ये जो chain है, ये जितनी भी lines हम draw कर रहे हैं, they show the glucose units joined together. Let us see कैसे ये joined together हैं. अभी हमने देखा glucose, they are the aldehydic sugars, therefore represented by the hexagons. ये जितनी भी linear chains हैं, ये जितनी भी, they are showing that various glucose molecules, they are joined together by 1,4-glycosidic linkages. इसको अगर हम यहाँ इस एंड पे ऐसे छोड़ देंगे और इस एंड पे ऐसे, तो दिस मीन्स द चेन इज कंटिन्यूड ऑन दिस साइड एज वेल एज दिस साइड. तो व्हाट इज दिस शोइंग, 1,4-glycosidic linkage. 1,4-glycosidic linkage से ये डिफरेंट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, दे आर जॉइंड टुगेदर. ये हम किसका स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, जितनी भी ये लीनियर चेन थी यहाँ पे हमने दिखाई, ये लेन, ये चेन सारी, सब में क्या आएगा, 1,4-glycosidic linkage. लेकिन जहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है, नई चेन अराइज हो रही है, लाइक एट दिस पॉइंट, जहाँ पर नई चेन अराइज हुई, लाइक एट दिस पॉइंट न्यू चेन इज अराइजिंग, जहाँ से नई ब्रांच अराइज हो रही है, तो इसका शुगर मॉलिक्यूल और इसके शुगर मॉलिक्यूल में कौन सी लिंकेज है, देयर विल बी 1,6-glycosidic linkage. देखो जैसे ये हमने एक चेन शो करी, अब हम दिखाते हैं कि we have this another chain, this another
glucose molecule chain. तो इसमें क्या आएगा कि यहाँ पर जो ये जॉइनिंग है इसका फर्स्ट और इसका सिक्स, तो ये जो ब्रांचिंग है जहाँ पर नई ब्रांच राइज हो रही है, जहाँ पर नई, इनके बीच में भी कौन सा होगा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। लेकिन जहाँ पर नई ब्रांच राइज हो रही है, जहाँ पे दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, at the point of new branch there will be 1,6 glycosidic linkage, otherwise there is 1,5 glycosidic linkage. So this is the structure of a homopolysaccharide, that is glycogen.